Hi, I am Dipanshu. I work here at Coding Ninjas as a mobile app developer. Today, in this episode of Tech Tales, we'll talk about React Native and why we opted for React Native at Coding Ninjas. So, let's first talk about what is React Native. So, as defined, React Native is a cross-platform framework for mobile app development created by Facebook. So, before going further, let's discuss what is cross-platform development. So, mobile development, we have two alternatives. या तो हम native में बना रहे होंगे. Native में बनाने का मतलब that we would be creating the app in the dedicated environment for that particular platform. Like अगर हमारे Android में app बना रहे हैं तो हम Java में या Kotlin में बना रहे होंगे. iOS के लिए बना रहे हैं Swift या Objective-C में बना रहे होंगे. But in case of cross platform हम सिंगल कोड करेंगे, वही हमारा कोड हमारा Android में भी वर्क करेगा, iOS में भी वर्क करेगा. Now let's discuss why we opted for cross platform at Coding Ninjas. So as we know, cross platform helps us with the common code base, and since we had requests from users for both the platforms, Android as well as iOS, we thought of going with the cross platform, and this will help us develop for both the platforms together, and we were able to release the app within time. Also, with the single code base, if we have any issues, we can fix them for both the platforms together. So, अगर हमें कोई इशू मिलता है एंड्रॉइड के लिए, किसी यूजर ने इशू रिपोर्ट किया, तो वो हमारा साइमल्टेनियसली iOS के लिए फिक्स हो जाएगा. सो दैट्स अनदर प्लस फॉर अस. नेक्स्ट हम बात करेंगे रिएक्ट नेटिव के बारे में. सो व्हाई वी स्पेसिफिकली चोज रिएक्ट नेटिव ओवर अदर क्रॉस प्लेटफॉर्म अल्टरनेटिव्स. So first and foremost reason, as we discussed, it was created by Facebook, and thus it has long backing, and it is being frequently developed. Next, this is one of the most important reasons we opted for React Native. It is the feel of the native app. So React Native converts a JavaScript code into the native code for the platform. Unlike some other alternatives, जहाँ पे हमारा कोड कुछ केसेस में तो जावास्क्रिप्ट का जो हमारा कोड है वेब व्यू में रेंडर करा के हमें विजिबल कर दिया जाता है एज अ ऐप. सो वेब व्यू दे आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर ऐप एंड वी कांट लेट दैट हैपन. सो दैट्स व्हाई रिएक्ट नेटिव. सो इसको थोड़ा सिंपल वर्ड्स में डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया. सो वी विल से कि अगर मैं रिएक्ट नेटिव में एक बटन मैंने बनाया है, सो इट्स नॉट मैंडेटरी कि इसका अपीयरेंस एंड्रॉइड और iOS में सेम होगा बिकॉज मैंने रिएक्ट नेटिव में एक बटन बोल दिया तो उसका अपीयरेंस दोनों में सेम होगा. नो, रिएक्ट नेटिव क्या करेगा, हमारे कोड को कन्वर्ट करेगा नेटिव कोड में. एंड्रॉइड के लिए एंड्रॉइड नेटिव कोड में, iOS के लिए iOS नेटिव कोड में. एंड वो अब हमारे प्लेटफॉर्म या हमारे OS के ऊपर है कि वो कैसे रेंडर करता है. तो अब रिएक्ट नेटिव ने एंड्रॉइड को बोला भाई बटन रेंडर करना है, iOS को बोला बटन रेंडर करना है. अब कैसे रेंडर करना है दैट्स प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक, वो प्लेटफॉर्म डिसाइड करेगा. सो उससे जो हमारी नेटिव की फील होती है, iOS के यूजर्स को iOS की फील चाहिए, एंड्रॉइड के यूजर्स को एंड्रॉइड की फील चाहिए, तो वो फील नहीं खत्म होगी. सो दैट्स अ वेरी गुड रीजन. सो नेक्स्ट, if you have ever tried mobile development, you will love this. So अगर आपने कोई मोबाइल डेवलपमेंट ट्राई करा है, so you must have said build time slows me down. So build time की वजह से बहुत ज़्यादा हमारी प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट होता है और ऐप भी मतलब डेवलपमेंट स्लो डाउन होती है बिकॉज हमें जरा सा भी चेंज करना है तो उसके लिए भी हमें दोबारा ऐप को बिल्ड करना पड़ता है. सो इट अफेक्ट्स द प्रोडक्टिविटी. iOS ने तो ये चीज़ रियलाइज कर ली है. while introducing Swift UI framework they fixed this, but Android में अभी भी है, you have to build again and again. So but in React Native since day one we have something called hot reloading, जहाँ हमारा जो भी चेंज होगा वो हमारे डिवाइस में डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होगा विदाउट अ नीड टू बिल्ड द ऐप अगेन एंड अगेन. सो आप यहाँ चेंज करो, वहाँ आपका डिवाइस में रिफ्लेक्ट होगा. सो इट इम्प्रूव्स योर डेवलपमेंट साइकिल. सो नेक्स्ट, अगर आपके वेबसाइट है उसका फ्रंट एंड रिएक्ट में है, so you would be able to reuse the components that were created in React here as well. So this would be another plus for you. To conclude, I would say React Native fitted nicely in our scenario. Also, most of the native APIs are supported in React Native, but still there are some that are not yet supported in React Native. For those, they will be added soon. Otherwise, you can always code them into the specific platform. But do take my advice cautiously, because there are chances you might end up with 3 code bases where you thought of maintaining only one using cross-platform. So this would be possible in the scenario when you are creating a lot of custom views, or you are accessing some native APIs that are not yet supported with React Native and you have to code in the specific platform.
For example, if you're using ARKit in iOS or alarms in Android, so please take a calculated decision. Thank you.